Topic is teaching, learning, communication, which is a part of AETCOM, attitude, ethics, and communication, or affective domain. And we all know that it's now formal or official part of MBBS curriculum. This whole resource material in this video and both the role plays which we all will witness is developed by the students of AFMC Pune under guidance of faculties, especially Dr. Santosh Singh, who is also leader of our group. So we thank them for the effort. Objectives of the session. After the end of this virtual teaching learning session, the FAMR fellows should be able to describe 5 effective ways to master communication. This is our objective number 1, and objective 2 is basic principles. Again, 5 basic principles of effective communication. For both the objective, there may be many points. We are in this video covering 5 points only. So let's start with objective 1, that is to learn 5 effective ways to master communication skill. For this objective, we are using a role play as immersive method. So please witness it and try to reflect. Good morning, everyone. Today we'll be focusing on role playing as a key method to improve our communication skills. I know some of you might be hesitant, but remember, this is a safe and supportive environment. I just don't see how pretending to be a patient can help us in real life situations. I understand your concern, Sanjay, but remember, role playing allows us to practice and receive feedback in a controlled setting. We'll start with a simple scenario and we'll discuss the experiences afterwards. One of you can act like a patient and Sanjay can act like a doctor. Good morning. How can I help you today? I got cough and a sore throat for the past 2 days. What did you had last night? I ate nothing. See, I am prescribing you some medicines. You must take it regularly. You'll get well soon. Great job, Sanjay. But remember to maintain eye contact and show empathy. How did it go for you? It was tough, but now I see that it helps. Sir, I find it hard to balance these sessions with my clinical patients. I understand, Meena. Let's try to integrate communication skills with the clinical rotations. For example, during your rounds, you can interact with the patients for a little more. Practice active listening and document your interactions. That sounds doable. I'll give it a try. Raj, today we'll be performing an OSCE to evaluate your communication skills. You'll be interacting with Harsh and I'll be giving you specific feedback. Yes. Good morning. I'm Raj. And what language are you comfortable with, sir? English. Okay. What's your name, sir? Harsh. Okay. So, what difficulty are you facing? I was having cough and cold, but now I'm fine. Okay. So, what's your age? It's 19 years. Okay, sir. So, I'll be examining you first, sir. So, let's start. So your pulse seems to be normal. We'll continue with some other procedures and you'll be good to go. Thank you. You did very well, Raj. Here's a detailed feedback of your evaluation. Simon, I know you prefer hands-on learning. So today, we'll have group discussion followed by e-learning modules and role playing. I really appreciate that. It really helps to have different ways to learn. This way, you have a mixture of practical and theoretical knowledge. So today, let's start with dividing yourselves into 2 groups and we'll revise what we learned today morning. Remember, communication skills are crucial throughout your career. Attend your workshops, seek feedback, and practice regularly. Let's commit to lifelong learning.
We will, sir. Thank you for your guidance. Let's recap. Overcoming reluctance through a supportive environment, integrating training into clinical rotations, using standardized assessments, adopting multimodal teaching, and committing to lifelong learning are the key to mastering communication skills. Keep practicing and supporting each other. Thank you, sir. So let's summate the learning of Objective 1. 5 effective ways to master communication skill can be by creating safe and supportive environment, by integrating communication training into clinical rotation, by using standardized assessment tools, by using multimodal teaching approach, and by encouraging lifelong learning and development. Fellows, now it's time for objective 2, that is to learn 5 basic principles of effective communication. Yet again, we are using a role play, in fact, 2 role plays to learn this. In the first role play, these principles are sort of poorly followed. And in the very next role play, these principles are well followed. So, by reflecting on both, we would be able to learn it well. Let's see. Yeah, Dr. Prashant. Yeah, I've seen the case you transferred to me. या भाई साहब उसको सेकंड लाइन ईटीटी पे डालना पड़ेगा. हाँ, और बीटा ग्लूटेन में डालना पड़ेगा उसको. यार कहाँ पुराने ज़माने का ट्रीटमेंट अभी भी चालू कर रहे हो? लगता है लेटेस्ट जर्नल पढ़ते नहीं हो आप लोग. क्या करते रहते हो? और प्रैक्टिस कैसे चल रही है तुम्हारी? हाँ भाई साहब, ध्यान रखना, आजकल बहुत डॉक्टर्स पे वायलेंस वगैरह बहुत ज़्यादा हो रही है. ठीक है ना? ऐसा नहीं होना चाहिए. अपने हॉस्पिटल में तुम खुद ही पेशेंट बन जाओ. ठीक है, चलो दिन, चलो, ओके, बाय बाय. डॉक्टर साहब, मेरी बेटी राधा है, अभी बहुत बीमार है, बहुत बुखार है, इसको तो जांच वगैरह कराई आपने? हाँ जी. डॉक्टर साहब बहुत बुखार है डॉक्टर साहब. एक्सरे दिखाइए अपना, एक्सरे. डॉक्टर साहब मेरा शरीर भी बहुत टूट रहा है डॉक्टर. ठीक है, ठीक है, ठीक है. और ये भी कागज सब दिया है डॉक्टर ने. ठीक है. डॉक्टर साहब क्या है इसमें? देखिए बहन जी, आप बेटी को पल्मोनरी कॉक्स हो गया है. ये क्या होता है डॉक्टर साहब? पल्मोनरी ये का बहुत ही खतरनाक बीमारी है और काफ़ी एक्सटेंसिव है वो भी, और साथ में राइट साइडेड प्लूरल एफ्यूजन भी है. डॉक्टर साहब ये आप क्या बता रहे हैं? ये क्या होता है? तो बहुत ज़रूरी है कि हम इनका इलाज. समझ नहीं आ रहा है. आई देखिए, इनको पल्मोनरी कॉक्स है और प्लूरल एफ्यूजन भी है, और हम जल्दी से जल्दी इनको एटीटी पे डालेंगे. डॉक्टर साहब हमारे कुछ समझ नहीं आ रहा है, थोड़ा ठीक से बताइए. डॉक्टर साहब हुआ क्या है डॉक्टर साहब मुझे? देखिए, मैंने बताया इनको पल्मोनरी कॉक्स है, यही एक्सरे में आया है. क्या बना हुआ है इसमें डॉक्टर साहब? देखिए, इसको आप छोड़िए, मैं ये कह रहा हूँ आपको दवाई लेनी पड़ेगी 6 महीने. 6 महीने डॉक्टर साहब? बिल्कुल 6 महीने. मुझे सारी दवाई दीजिए, मैं 2 महीने इंटेंसिव फेज होगा इनका 4 दवाई का, और अगले 4 महीने इनको कंटिन्यूएशन फेज होगा जिसमें 2 दवाई लेनी पड़ेगी. इतनी दवाई डॉक्टर साहब? बिल्कुल. अगर वो दवाई अब नहीं लेंगे तो या डॉक्टर प्रशांत, यस, आई हैव सीन द केस यू हैव रेफर्ड टू मी. या उसका थोड़ा ट्रीटमेंट चेंज करना पड़ेगा. या आई विल टॉक टू यू लेटर, मैं जरा ओपीडी में हूँ. ठीक है, ओके, बाय बाय. हाँ बहन जी. साहब ये मेरी बेटी राधा है, बहुत बीमार है, बुखार है, खांसी है, बहुत परेशान है. चिंता मत करिए बहन जी. बिल्कुल बिल्कुल. डॉक्टर साहब बहुत बुखार है डॉक्टर साहब, और खांसी में चिंता मत खून करो. भी आ चिंता, रहा है. कुछ आपने कराई है जांच वगैरह कुछ? हाँ हाँ, सारा जांच कराया. देखिए डॉक्टर ने लिखा है, इतना सब जांच भी है. ये फोटो भी खींचा था अभी कुछ. देखता हूँ, अभी देखता हूँ मैं. क्या हुआ है डॉक्टर साहब? बस अभी देख रहा हूँ. फोटो तुमने कब खिंचाया था? 2 हफ्ता पहले ना? जी आई. ये 2 हफ्ते पुराना है. हाँ हाँ. बहुत शरीर भी टूट रहा है डॉक्टर बिल्कुल साहब. पतली होगी डॉक्टर साहब, कुछ खाने को मन नहीं करता है इसका. मैं इतना खिलाने की कोशिश करती हूँ पर ये कुछ नहीं खाती है और पतली होती जा रही है. देखिए बहन जी, मैंने देखे हैं आपकी रिपोर्ट और एक्सरे भी. राधा को टीबी हो गई है, छाती की टीबी. ये देखिए आप, ये जो फोटो है आपके फेफड़ों का फोटो है,
और आपको पता ही होगा फेफड़े हमारे सांस लेने के लिए हैं। राधा के केस में क्या हुआ है, ये जो हिस्सा है ये खराब हो गया है टीबी के कारण, और दूसरे हिस्से में ये पानी भर गया है। पानी कैसे भरता है फेफड़े में? पानी बस कैसे भरता यही है इस डॉक्टर? बीमारी का लक्षण है। मुझे लगता है कि थोड़ी सी बीमारी आगे निकल गई है, इसलिए पानी भर गया है। बस तो जाएगी नहीं ठीक हो जाएगी ना डॉक्टर? अब चिंता मत करिए, आजकल हमारे पास पूरा इलाज है टीबी का। बस एक बात है, इसका इलाज एक थोड़ा लंबा है, कम से कम 6 महीने आपको दवाई लेनी पड़ेगी। डॉक्टर साहब आप मुझे दे दीजिए, मैं रोज उसको दवाई खिला दूंगी। देखिए बहन जी, मैंने इनकी रिपोर्ट भी देखी है और इनको पीलिया भी हुआ था, जॉन्डिस भी हुआ था 2 महीने पहले। हुआ था इसको। हाँ, तो जो दवाई हम अब देंगे टीबी के लिए वो भी इनके लिवर पे असर डाल सकती है। अच्छा, इसलिए पहले 2 महीने में जो हम 4 दवाई इनको जो देंगे, हर हफ्ते अच्छा रहेगा मेरे पास आए। हफ्ता साहब नहीं आ पाएंगे। देखिए बहन जी, हफ्ता नहीं आ Let's summate the learning for objective 2. Based on these role plays, we can say that 5 important basic principles of effective communication can be: 1. Build trust and maintain two-way communication in empathetic environment. This will require understanding patient's background, feeling and problems. Number 2, listen the patient carefully and allow the patient to complete the talk or what he want or she want to say. Third, avoid medical jargons, simplify the words as per patient's education and knowledge, and provide information in a way that patient and relatives can understand. Number 4 is to maintain eye contact. And number 5 is all the domains are important: knowledge, skill, and affective. So, displaying competence in all the domains. We take this opportunity to salute the Institute and the whole organization, that is our army, for what they do for our nation and for all of us. हवा से नहीं, फौजियों की सांसों से लहराता है तिरंगा। जय हिंद।